connected one device. Oh. पीडीएफ ओपन करते और पढ़ाई करना चालू करते। नहीं पीडीएफ नहीं, हम पेज में नोट्स बनाई उसको ही रेफर करेंगे अपन। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और इसका रिवीजन करते हैं भाई। ये सब्जेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है जिससे इसका आंसर देना है, तो इसको पहले खत्म करते हैं। ठीक है, ये बात इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स એમાં પહેલું है solubility અથવા તો solution. It have a solute and a solvent. બે વસ્તુ હોય solute and solvent. It is a mixture of components which are physical and chemical homogeneous. सेम फेज वाले लोगों का मिक्सचर है ये सॉल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हो? सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होती है? The solute is the components present in the smaller quantity within the solution. It's called as a solute. Solid, liquid or gas, तीनों मोड में हो सकता है solute. Solvent, the solvent is the component present in the larger quantity within the solution. Medium which the solute disperse uniformly. Solubility कैसे कहते हैं भाई? The ability of a substance or solute to dissolve in a solvent is called as a solubility. Saturated solution, ऐसा solution जिसमें हमने solute डाल दिया और वो ज़्यादा नहीं डिसॉल्व हो सकता, उसे हम कहते हैं saturated solution. The solution containing maximum number of solute at a constant temperature is called saturated solution. Supersaturation, a solution that contains more of the dissolved material than could be dissolved by the solvent under normal circumstances. Unsaturated, a solution where the solute concentration is lower than its equilibrium solubility. Solubility expression, the solubility of drug may be expressed in a number of ways. The United States Pharmacopoeia (USP) describes the solubility of drug as a part of a solvent required for dissolve 1 part of solute. 1 ગ્રામ સોલ્યુટ ડિઝોલ્વ કરવા માટે કેટલા ml સોલ્વન્ટ જોઈશે એને જ કહેવાય છે યુએસપી ની ભાષામાં સોલ્યુબિલિટી. ક્વોન્ટિટેટિવ એમાઉન્ટ કેટલા ગ્રામ છે, ક્વોલિટેટિવ પરસેન્ટેજ છે, એટલે કે એક ડ્રગ લીધી એમાં કેટલા પરસેન્ટેજ પ્યોર ડ્રગ છે એ ક્વોલિટેટિવ. 100 ગ્રામ પાવડર હોય તો એમાં 97 ગ્રામ પીસીએમ પ્યોર હોય એને કહેવાય પરસેન્ટેજ અથવા તો પ્યોર જે કહેવાય. ઓકે, ચલો આ થઈ ગયું. પછી શું છે તો કે સોલ્યુશન બનાવ્યું છે A plus B is equal to PPT. Solubility is also quantitatively expressed in terms of a molarity and a percentage. Solubility acquires under dynamic equilibrium, which means that solubility results from the simultaneous and opposing process of a dissolution and phase joining. Dynamic equilibrium.
which means that solubility results from the simultaneous and opposing process of a dissolution and phase joining. The solubility equilibrium acquires when the two processes proceed at a constant rate. भाई साहब ये लीजिए, सेल्फी कैमरा ऑन कर दिया है भाई। अपन की जो है वो 6 दिन हो गए। What are you? और इसका मैसेज देखना पड़ेगा रे बाबू। Are you sure? Said hi. Okay, what are you reading? I am reading of my pharmacy study for GPET 2028 and 29 also. और उसने ही कहा है हेलो। हाँ हेलो भाई, हेलो भाई। ये मोबाइल गिर ना जाए बस। हाँ, और इसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ मैं, जिसकी वजह से अच्छे से दिख पाता। बाहर अच्छे से बारिश हो रही है और पढ़ने का मजा ही कुछ और आ रहा है। चुका हूँ मैं यार। भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर होने में अब थोड़े ही सब्सक्राइबर बाकी है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ठीक है। सिर्फ 7 सब्सक्राइबर ही मेरे को चाहिए 100 सब्सक्राइब होने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लेना। और हाँ, इस चैनल पे आपको एजुकेशन बेस्ड कंटेंट ही मिलेगा। मेरे को लगता है मेरे को खिड़की बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलता है उतना तो। और कमेंट करते रहो भाई, मज़ा आता है आपके साथ बात करने में। ठीक है, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। टर्म्स, पार्ट्स ऑफ अ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, वेरी सोल्यूबल, जिसको लेस देन 1 पार्ट चाहिए होता है डिसॉल्व होने के लिए। फ्रीली सोल्यूबल 1 to 10 पार्ट चाहिए होते हैं। सोल्यूबल 10 to 13 पार्ट चाहिए होते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल 3 से 4 पार्ट चाहिए होते हैं। स्लाइटली सोल्यूबल 100 से 1000 पार्ट चाहिए होते हैं। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल 1000 to 10,000 पार्ट रिक्वायर्ड। पार्ट प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल 1000 से कितना भी गैलन लगा लो, नहीं डिसॉल्व होगा तो नहीं होगा, ठीक है। परसेंटेज सोल्यूबिलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram of solvent, it is called as a percentage weight by volume. Sorry, weight by weight. Percentage volume by volume, number of ml of solute dissolved in 100 ml of solvent. dissolve बोला है, contain नहीं बोला, ध्यान रखना भाई। percentage weight by volume, number of gram of solute dissolved in 1 liter, sorry 100 ml of solvent, it is called as a percentage weight by volume. Molarity, number of mole of a solute present in, sorry, dissolved in 1000 ml of a solution, it is called as a molarity. Molality, number of gram, sorry, number of mole of solute dissolved अथवा तो present in 1 kilogram of solvent, it is called as a molality. Small m.
इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट 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 का इंटरेक्शन कैसे होता है वो जानेंगे हम. इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट. ओके. The interaction between solute and solvent which results in a stabilization of a solute species in the solvent. The interaction between solute and solvent which result in a stabilization of solute species in the solvent is called as a solute-solvent interaction. यानी कि सोल्यूट को स्टेबिलिटी जिसमें मिलती है ना उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. वाओ. हेलो भाई लोग, कैसे हो? कमेंट कर दो कमेंट. 12:10. ठीक है भाई, 1-2 बजे तक अपन को ये काम निपटाना है. दिस इंटरेक्शन इन फ्लूइड्स एंड द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट लाइक reactivity, color, stability and property of solvent like density and viscosity also matter. The different force which play different role in the solvent-solute interaction are attractive or repulsive forces. Okay. Hydrogen bonding, ion dipole interaction, van der Waals force, van der Waals force, which consists of a dipole, induced dipole, and induced dipole. Mechanism of solute-solvent interaction. Mechanism involves 3 steps. Solution. Detachment of solute molecule from bulk. Formation of vacant site in a solvent. Entrapment of a detached solute molecule in the vacant site of solvent. तो स्टेप 1 को हम देखें इन डिटेल. तो Stage 1, breakdown of solvent bond and formation of holes in the particles. Stage 2, intramolecular bonding of solute molecule break away. 6 है ना तो वो 6 अलग अलग हो जाएगा. Stage 3, free solute molecule अथवा तो solid is integrated into the whole of the solvent. सॉल्वेंट की जो वैकेंट जगह है ना उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट हो जाएंगे. बेसिकली ये बोला है भाई. Causes solute-solvent interaction is based on the principle of like dissolve like. Polar plus polar dissolve, polar plus non-polar not dissolve, non-polar per non-polar is equal to dissolve. ठीक है. Type, there are 3 types of solvent: polar, non-polar, sinpolar.
अच्छा नहीं लग रहा, निकाल देता हूँ मैं। अभी लग रहा है ना बढ़िया। पोलर polar solvent can dissolve polar solutes. They have a high dielectric constant which reduces the force of attraction. Neutral donate electron. न्यूट्रल न्यूट्रल जो है वो डोनेट इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो कैटायन बनता है। न्यूट्रल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो एनायन ही बनेगा ना, माइनस चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। कमेंट करो, कमेंट कुछ नहीं। एड एज अ मॉडरेटर टू यूजर, नो बाबू लोग कमेंट करो। The dissolved figure indicates the transfer of electron result in formation of iron water is a polar solvent. When sodium chloride is dissolved in a water, first the attractive force between the molecules are becomes weak. सोडियम क्लोराइड के बीच के जो सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, पहले वो वीक होता है, become weak, then the ions are surrounded by water molecules. ओके, सोडियम क्लोराइड दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। When molecule interact, repulsive and attractive force operate as the two molecules are brought close together. The opposite charge in the two molecules being close together, then the linked charge causes the molecules to attract one another. The repulsive is due to interpenetration of electrons could of the molecules and increase exponential with a decrease in a distance between molecules at certain equilibrium distance. The attractive and repulsive force become equal and hence the system becomes stable. बरोबर है बाबू? यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो। खत्म कर दिया है। Factor affecting solubility. First of all, pressure. The effect of pressure on the gas is given by Henry's law, which states that in a very dilute solvent at a constant temperature, the concentration of dissolved gas is directly proportional to the partial pressure of a gas above the solution at equilibrium. According to Henry's law, C is equal to sigma into pressure, partial pressure, sigma जो solubility coefficient है, और C जो है वो concentration of gas। जो मुझे देख पा रहा है वो मेरे को कमेंट कर सकता है कि ये पंखे की आवाज़ आपको फुल सुनाई दे रही है या फिर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दो कि पंखे की आवाज़ आ रही है या फिर मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है, इरिटेशन कर रही है या फिर नहीं। प्लीज़ एक कमेंट कर दो, मेरी आवाज़ साफ आ रही है या फिर ये पंखे की आवाज़ साफ आ रही है। प्लीज़ कमेंट कर दो, उसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि इसको बंद करना है कि चालू रखना है। मेरी ओर घुमा देता हूँ ना इसको मैं थोड़ा सा। भाई लोग जो भी देख रहा है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं टेम्परेचर की इफेक्ट क्या होती है। मोस्ट सॉलिड डिजोल्व विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड द solubility of such solid increase as the temperature is increased. For solid which dissolve with the evolution of heat and increase in a temperature cause decrease in the solubility. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे
The sound of the ape is a not melody. Vinod Bala. Best part of being pet. Answer will appear at a text message. Done. इसको मैं इधर लगा दे रहा हूँ. अबे ठीक है भाई, मेरे को लगता है मेरे को जो है वो माइक कनेक्ट करना पड़ेगा. ये 2 नंबर पे ना, इसको 1 नंबर पे कर देता हूँ, कम आवाज करेगा ये. विनोद बाला. चैनल एक्टिविटी रिपोर्ट विद यूजर इन अ टाइम आउट, और दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा. हेलो 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 भाई, हेलो. ठीक है चलो, वो तो मैंने थोड़ा सा बहुत कम कर दिया है. अभी कम आवाज आएगा पंखे का, लेकिन आएगा. ठीक है. टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया है भाई. टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सोल्यूट जो सॉलिड या फिर लिक्विड होगा तो उसका डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा. लेकिन अगर सोल्यूट गैस हुआ तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वो घटेगा. समझ रहे हो? डिसोल्यूशन रेट घट जाएगा. और यही तो हमको सेम दिखने को मिलता है सोडा में. अगर अब जब हम सोडा पीते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम सोडा लेते हैं तो उसके अंदर फुल्ली बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसेस भरे होते हैं, और उसको ठंडे टेम्परेचर में इसीलिए रखा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी रहे. इसलिए नहीं, ना 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 ना, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस डिजोल्व ही रहे, उसके लिए हम कोल्ड ड्रिंक को कूल टेम्परेचर पे लाते हैं. अगर हम कोल्ड ड्रिंक को टेम्परेचर बढ़ाएगी कोल्ड ड्रिंक का, तो जो गैस है ना वो डिसोल्व हो ही होती है, वो गैस उड़ जाएगी, और उसकी वजह से हमें सोडा पीने में अच्छा सा मज़ा नहीं आएगा. वैसी फीलिंग नहीं आएगी जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस होता है तब आती है. तो इसलिए हम सोडा की जो बोतल होती है ना उसको ठंडे टेम्परेचर में रखते हैं, ना कि गर्म टेम्परेचर में. समझ में आया? तो ओके कर दो चैट में. Molecular structure. Slight modification in the molecular structure of solid can result in the change in a solubility. Okay. पहलू है, when esterification of drug acquires solubility decrease. If weak acid is converted into its salt, it is a ionic dissolution in water. Increase in the interaction between solute and solvent leads to increase in the solubility. Example तरीके क्लोरमफेनिकोल से bitter to chloramphenicol 12 nucleate tasteless. Erythromycin pronating. Particle size. When particle size is small then the surface area. When particle size is small then surface area large, so it results increase in the surface free energy, which is increase the solubility of drug. Nature of solvent and co-solvent. Addition of third substance increase the solubility of solids in a liquid. Thus, substance called as a co-solvents. Properly soluble drugs are dissolved in a mixture of water and alcohol. Effect of complex formation. When a complex is formed, it results in an increase or decrease of solubility. Example, sir.
Addition of I2 in water results in the increase in the solubility within the addition of Ki due to complex formation of Ki3. Yes. Babu. Babu. अभी साला ये तो हम पढ़ाई नहीं थे. स्किप हो गया. स्किप हो गया. Non-polar. Non-polar solvents are characterized by a lack of a significant particle charge or zero nuclear zero अथवा near zero parameters. Dipole moment due to an even distribution of electrical charges. Said hi. Hello भाई. Hello. Zerzotti Oroleno. आउटसाइड इंडिया से हो क्या? ऐसा नाम रखा है. सॉरी लेकिन भाई आपका नाम पढ़ने में मेरे को दिक्कत आ रही है. जेसोटी ओरेलेनो. हाय भाई. हाय हाय. इसका मैसेज आया रे. रखो भाई. ये मैसेज अपने काम का नहीं है. ठीक है. नॉन पोलर सेम आयन के साथ बंधा होता है. सेम नॉन पोलर सब्सटेंस कहते हैं. हाँ, नॉन पोलर. प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉन पोलर की? द हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टिपिकली बिटवीन 1 and 20. ओके. And mainly rely on a weak induced dipole van der Waals London dispersion interaction to dissolve solutes. They are immiscible with water. Said hi. Hello. Hello boy. Hello. Dissolve. Non-polar solvents effectively dissolve non-polar solutes such as oil, fats, wax and hydrocarbons. ये तो बरोबर बात है. अगर आपका दोस्त आपके सेम नेचर का है तो ही आपका वाइब उसके साथ मैच होगा. अदरवाइज आप लोग लड़ोगे एक साथ. ठीक है. हाँ, आपकी वाइब मैच होनी चाहिए. यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है सोल्यूबिलिटी में. अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो आपका सोल्यूट भी नॉन पोलर ही होना चाहिए. अदरवाइज वो डिजोल्व नहीं होगा. और जो आपका सोल्यूट है वो पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर ही होना चाहिए. अदरवाइज वो भी सोल्यूट नहीं होगा. सॉरी, डिजोल्व नहीं होगा. क्या बोल रहा हूँ मैं यार. देख के बताओ मैं चश्मे में अच्छा लग रहा हूँ या फिर बिना चश्मे में अच्छा लग रहा हूँ. ये है मेरा विदाउट चश्मा. ये है मेरा विथ चश्मा. ठीक है. यहाँ पे हेक्सा बेंजीन, हेक्सेन, बेंजीन, टोल्यूइन, CCl4, फिक्सन. Semi-polar solvents. Semi-polar solvents have properties intermediate between polar and non-polar solvents. They are typically strong dipole molecules. Semi-polar solvents. Semi-polar solvents have properties intermediate between polar and non-polar solvents. They are typically strong dipole molecules, but many do not form hydrogen bonds like a polar particle solvent. ये तो बात पक्की है भाई. Properties. They have a moderate dielectric constant, typically between 20 to 50. They can induce a degree of polarity in one polar molecules, which makes them effective intermediate solvents for promoting miscibility between otherwise immiscibility polar and non-polar liquids. कुछ समझ में नहीं आया ब्रो. Dissolve. They can dissolve a wider range of a substance than strictly polar or non-polar solvents and are often used as a co-solvent in a mixture.
acetone, ethanol, glycerin, propylene glycol, esters and ketones. They are some examples of semi-polar. Said hi. Hello भाई, hello hello. अबे हाँ, मुड़ गया रे, मुड़ गया. Ideal solubility parameters. Hildebrand solubility parameters. Hildebrand solubility parameters. कैसा नाम है भाई? पेट में स्क्रैम्स आ रहे हैं. It is a numerical estimate of degree of interaction between materials and can be good indication of solubility. Bunsen solubility parameter. It is a one of the way to predict its one material will dissolve in another and form of a solution. Bunsen solubility parameter. It is one of the way to predict if one more material will dissolve in another and form of solubilization. Hildebrand solubility parameters. The Hildebrand solubility parameter is the square root of the cohesive energy density. The cohesive energy density is the amount of energy needed to completely remove unit volume of molecules from their neighbors to infinite separation and ideal gas. This is equal to the late heat of vaporization of the compound divided by its molecular volume in the condensed phase. In order of a material to dissolve, this same interaction need to be overcome use the molecules are separated from each other. ठीक है भाई, हेलो हेलो करते रहो, हम भी करते रहेंगे. And surrounded by the solvent. In 1936, Joel Henry Hildebrand suggests the square root of the cohesive energy density as a numerical value indicating solvent behavior. This latter becomes known as the Hildebrand solubility parameters. Materials with a similar solubility parameters will be able to interact with each other, resulting in a solvation miscibility or swelling. The Bunsen solubility parameters. The Bunsen 2007, according to individual for all the molecule interaction in a mole of material, namely dispersion, force, polar interaction, dipole-dipole, and specific interactions such as hydrogen bonding. The cohesive energy expressed as E is equal to delta H minus RT. If you are outside of the India, yes or no? You are outside of the India. Delta H refers to the latent heat of a vaporization. It is the absolute temperature and R is the universal gas constant. Is expressed as a sum of each contribution. Bunsen 2007 is equal to AD plus EC plus EH. Applications. It indicates the different polymers of a different solvent.
It is hello bye, hello. Determination of structure, activity, relationship, solvation. The interaction between solute and solvent molecules. Association, solubility, oxidation. Say that I will. It is a chemical reaction where by ions of opposite electrical charge comes together in a solution to form a distinct chemical entity. It is a chemical reaction whereby ions of opposite electrical charge comes together in a solution to form a distinct chemical entity. The forces involved in the attachment of opposite electrical charge are electrostatic forces, and dissociate have been characterized by means of a vibration spectroscopy. The most INT factors will determine the extent of ion association is the dielectric constant of the solvent. Ion and ion association are classified according to this number of ions that associate with each other, such as ion pairs, ion crystal, etc. ये तो भाई खत्म कर दिया है हमने। Solubilizing agents. Within the liquid medium. Where the most of the drugs are either weakly active or weakly digested in nature. Therefore, they are less soluble in water, but their salt form is soluble in H2O. So, by salt forming increase the solubility.
effect of anything. Yeah. It's fine. Hmm. Fine to the
Congratulations. Okay, what are you reading? Yes, brother. Respect वाला गुलबाग said hi.